Hi students, Indu Sharma presenting you today for class 10th course A students poem Fasal chapter 6. The poem is written by Sri Nagarjuna ji and today I also come with the question answers for you of this poem. So let us start the poem Fasal पाठ प्रवेश। यह कविता हमें किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है, हमें कृषि व प्रकृति के महत्व को समझाती है। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि इंसान की मेहनत और प्रकृति में मिलने वाले पोषक तत्व दोनों के योगदान और मिलान से ही खेतों में फसल लहला उठती है। यानी इंसान और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। बिना इंसान की मेहनत के फसल नहीं हो सकती और ना ही बिना प्रकृति के सहयोग के फसल उगाना संभव है। इंसान जो भी चाहे जब भी चाहे प्रकृति से बिना किसी संकोच के ले सकता है। प्रस्तुत कविता में कवि फसल को तैयार होने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनका वर्णन कर रहे हैं। So the English explanation is, this poem takes us closer to the farmer and agriculture culture. We understand the importance of agriculture and nature. Through this poem, the poet wants to tell that the crops flourish in the field only by the contribution and matching of both the hard work of human beings and the nutrients found in nature. That is, human and nature complement each other. There can't be a crop without human effort, nor is it possible to grow crops without the cooperation of nature. Man can take whatever he wants whenever he wants from nature without any hesitation. In the presented poem, the poet is describing the things are required for the preparation of the crops. Let us start the poem with the explanation of paragraphs. एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि के हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि फसल किसी एक व्यक्ति के परिश्रम या फिर केवल जल या मिट्टी से नहीं उगती है। इसके लिए बहुत अनुकूल वातावरण की ज़रूरत होती है। इसी के बारे में आगे लिखते हुए कवि ने कहा है कि एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों नदी के पानी के मिलने से यह फसल पैदा होती है। Meaning of the lines. In the presented line, the poet has tried to tell us that the crop does not grow by the hard work of any one person or only by water or soil. It requires a very favorable environment. Writing further about this, the poet has said that not one, not two, this crop is produced by mixing the water of lakhs and lakhs of rivers. See, look here. This is the Ganga river. Imaginative pictures I want to show you. Through the pictures that we get the crop with the hard work of not only a single person, lots of people's work together in the field
Then after we get the crops and we get the food. किसी एक नदी में केवल एक ही प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जब कई तरह की नदियां आपस में मिलती हैं तो उनमें सारे गुण आ जाते हैं, जो बीजों को अंकुरित होने में सहायता करते हैं और फसल खिल उठती है। ठीक उसी प्रकार एक या दो नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से यह धरती उपजाऊ बनती है और उसमें बोए गए बीज अंकुरित होते हैं। खेतों में फसल एक खेत की मिट्टी नहीं बल्कि कई खेतों की मिट्टी मिलती है, तब जाकर वह उपजाऊ बनते हैं। There is only one type of quality in a single river, but when many types of river meet, see, look here, students. I'm showing you the pictures of rivers. One is Ganga Nadi and here is another river. But when many types of river meet, all the qualities come in them, which help the seeds to germinate and the crops to blossom. In the same way, not just one or two, but the hard work and sweat of thousands and millions of people make this earth fertile and the seeds spawn in it sprout. In the field, not only the soil of one field, but the soil of many fields is found, only then it becomes fertile. Students, I want to show you here different types of soil and I want to explain also which kind of soil, different types of soil to make fertile our land. काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों, ज्वालामुखी चट्टानों के टूटने और इसके लावा के पिघलने से बनती है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी और कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें लाइम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटाश होते हैं, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ इसमें कम होते हैं। इस मिट्टी का काला रंग टिटनीफेरस मैग्नेटाइज और जीवांश ह्यूमस के कारण होता है। यह मिट्टी डेक्कन लावा के रास्ते में पड़ने वाले क्षेत्रों जैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में होती है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती नदियों के किनारों पर यह मिट्टी पाई जाती है। Black soil is formed by the breakdown of basalt rocks, volcanic rocks and its lava. This soil is also known as regur soil and cotton soil. It contains lime, iron, magnesium and potash, but is deficient in phosphorus, nitrogen and organic matter. The black color of this soil is due to the titaniferous magnetite and bacteria humus. These soils occurs in areas lying in the path of the Deccan lava, such as part of Maharashtra, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Soil is found on the bank of the Godavari, Krishna, Narmada and Tapti rivers. Now I am presenting to you, आपको मैं दिखा रही हूँ जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। दोमट मिट्टी भी बोलते हैं हम इसको। और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी, पाए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी का समूह है। वेबसाइट एग्री फार्मिंग के मुताबिक
देश के कुल भूमि क्षेत्र का करीब 15 लाख वर्ग किलोमीटर या 35% हिस्से में यही मिट्टी है। देश की लगभग आधी कृषि जलोढ़ मिट्टी पर होती है। जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होती है जिसे नदियां बहा कर लाती हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और पोटाश की मात्रा कम होती है, लेकिन फास्फोरस और ह्यूमस की अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान से चलते हुए गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र तक फैली है। इस मिट्टी की यह खासियत है कि इसमें उर्वरक क्षमता बहुत अच्छी होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई मिट्टी को खादर कहा जाता है। Alluvial soil is the most important soil group found in the largest area in India. According to the website of agri-farming, about 1.5 million square meter or 35% of the country's total land area is covered by this soil. About half of the country's agriculture is done on alluvial soil. Alluvial soil is the soil which is brought by the rivers. This soil is low in nitrogen and potash but high in phosphorus and humus. Alluvial soil extends from Punjab in the west of North India to the entire northern Great Plains till the delta region of river Ganges. The specialty of this soil is that it has very good fertilizers capacity. The old alluvial soil is called Bangar and the new one is called Khadar. See, look at here. रेड क्ले, लाल मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी में होने वाली फसलें। लाल चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, मूंगफली, रागी, आलू, तिलहन व दलहनी फसलें, बाजरा, आम, संतरा जैसे खट्टे फल व कुछ सब्जियों की खेती अच्छी सिंचाई व्यवस्था करके की जाती है। Red clay crops grown in red and yellow soil: rice, wheat, sugarcane, maize, groundnut, ragi, potato. Oilseed and pulse crops: sour fruits like millet, mango, orange, and some vegetables can be grown by providing good irrigation system. Here comes laterite मिट्टी से मिट्टी में होने वाली फसलें। लेटराइट मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन कपास, चावल, गेहूं, दलहन, चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल और काजू की खेती इस मिट्टी में की जाती है। इस मिट्टी में आयरन की अधिकता अधिक होती है, इसलिए ईंट बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। Laterite soil is not very fertile, but cotton, rice, wheat, pulses, tea, coffee, rubber, coconut, and cashew are cultivated in this soil. This soil is rich in iron, so it is also used in making bricks. शुष्क मिट्टी: अरावली के पश्चिम क्षेत्र में पाई जाने वाली शुष्क मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है और क्ले की मात्रा कम होती है। सूखे वाले क्षेत्रों में ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी के कारण भी ये मिट्टी शुष्क हो जाती है। ये मिट्टी क्षारीय होती है, इसमें नमक की मात्रा अधिक व नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी का रंग कुल लाल या भूरा होता है। ड्राई सॉइल: द अमाउंट ऑफ सैंड इज मोर देन in the dry soil found in the western region of Aravali, and the amount of clay is less. This soil also becomes dry due to the lack of humus and moisture in dry areas. This soil is alkaline and has high salt content and low nitrogen content. The color of this soil is generally red or brown.
शुष्क मिट्टी में होने वाली फसलें। इस मिट्टी में गेहूं, मक्का, दलहन, मक्का, जौ, बाजरा आदि उगाया जा सकता है। ड्राई सॉइल क्रॉप्स, wheat, maize, pulses, maize, barley, millet, etc. can be grown on this soil. I hope you understand which soil is for like good for to make the uh, to grow up for our crops, and which soil is very useful for our crops. Now the next stanza. फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। So again we are seeing that the different kinds of rivers, water here in the images. चलिए आइए पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे यह प्रश्न करता है कि यह फसल क्या है, अर्थात यह कहाँ से और कैसे पैदा होती है। इसके बाद कवि खुद इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा है। यह मिट्टियों का ऐसा गुण है जो उसे सोने से भी ज्यादा मूल्यवान बना देती है। यह सूरज की किरणों एवं हवा का उपकार है जिनके कारण यह फसल पैदा होती है। So now the English explanation is here. In the presented line, the poet asks us that what is this crop? That is, from where and how does it arise? After this, the poet himself answers this and says that the crop is nothing but the magic of the water of the rivers. There is glory of touch of the hands of farmers. This is such a quality of soil which makes it more valuable than gold. This is due to the rays of the sun, of the wind, due to which this crop is produced. See, look here. These images shows that this is due to the rays of the sun and the winds here. I am showing to you in this picture. The crops are swinging by the wind, and here is also the sun is rising and its rays give the energy to the crops. And here are the peoples are doing lots of hard work for us. Let us read again. आगे अपनी इन पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि फसल कैसे पैदा होती है। हम इसी अनाज के कारण जिंदा हैं, तो हमें यह ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर इन फसलों को पैदा करने में नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी एवं किसान के परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमें उनके महत्व का ज्ञान हो। Try to understand by these pictures. In these lines, the poet has tried to tell us that how the crops is produced. We are alive because of this grain. So we must know that after all it takes river, sky, air, water,
soil and hard work of the farmer to produce these crops so that we can know their importance. So through these pictures and the explanation of these lines, I hope you understand the poem easily. Now, let us start the question answer of this poem. प्रश्न एक, कवि के अनुसार फसल क्या है? उत्तर, कवि के अनुसार नदियों के पानी का जादू फसल के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि बिना पानी के फसल का उगना नामुमकिन है। करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत का नतीजा फसल के रूप में मिलता है। भूरी, काली व खुशबूदार हल्की पीली मिट्टी यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पोषक तत्व और सूरज की किरणें भी अपना रूप बदलकर इन फसलों के अंदर समाहित रहती हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर ही पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा भोजन बनाते हैं। असल में संक्षेप में कहा जाए तो फसल करोड़ों किसानों की लगन व मेहनत का नतीजा, नदियों के पानी का जादू, मिट्टी में पाए जाने वाले जरूरी अवयव, सूर्य की किरणें व हवा में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मिलन का नतीजा है। The explanation is, according to the poet, what is crop? Answer is, according to the poet, the magic of the water of the river appears in the form of crops because it is impossible to grow crops without water. The result of the hard work of crores, millions of farmers, day and night is found in the form of crops. Brown, black and aromatic light yellow soil means the nutrients of different types of soil, and the rays of the sun also change their form and remain contained inside these crops, because plants make food through their leaves by absorbing sunlight and carbon dioxide gas present in the air. In fact, in short, the crop is the result of the hard work and dedication of millions of farmers. The magic of river water, the essential ingredients found in the soil, the rays of the sun, and the carbon dioxide gas found in the air. प्रश्न 2, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? किसान की मेहनत के साथ साथ पानी, मिट्टी का गुणवत्तापूर्वक अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह के पोषक तत्व, पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की किरणें व कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि की आवश्यकता होती है। करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत, नदियों के पानी का जादू, भूरी, काली व खुशबूदार मिट्टी यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पोषक तत्व और सूरज की किरणें भी अपना रूप बदलकर इन फसलों के अंदर समाहित रहती हैं। ये सभी फसल उगाने के लिए बहुत आवश्यक है। Question number 2. In the poem, the essential elements for growing crops have been talked about. What are those essential elements? Answer. Along with the hard work of the farmer, water, quality of soil, different types of nutrients in different types of soil, sun rays and carbon dioxide gas, etc. are required for plant to grow. Day and night hard work of
corrodes millions of farmers. Magic of river water, brown, black, and aromatic soil means different types of soil, nutrients, and sun rays also change their form and remain inside these crops. All these are very essential for growing crops. क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3, फसलों को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? What does the poet wants to express by calling the crops the dignity of the touch of hands and the glory? उत्तर, हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि किसान की अथक मेहनत को सम्मानित करते हैं, क्योंकि किसान की लगन व कठिन परिश्रम के बिना खेतों में फसल नहीं उग सकती। फसल के फलने फूलने में एक या दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों किसानों के हाथों के स्पर्श की गरिमा विद्यमान होती है। कवि कहते हैं कि मिट्टी और पानी के पोषक तत्व तथा सूरज की ऊर्जा भी तभी सार्थक होती है जब किसानों के हाथों का स्पर्श इसे गरिमा प्रदान करता है। आंसर, by saying dignity of the touch of hands and glory, the poet honors the tireless hard work of the farmer, because without the dedication and hard work of farmer, crops can't grow in the field. The dignity of the touch of the hands of millions and crores of farmers is present in the flourishing of the crops, not one or two. The poet says that the nutrients of soil and water and the energy of the sun are meaningful only when touch of the hands of farmers gives it dignity. भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। Explain the meaning. Transformation is the rays of the sun, the limited hesitation is the dance of the swinging of the wind. भोजन बनाने के लिए पौधों को सूरज की रोशनी व हवा की आवश्यकता होती है। सूरज की किरणें भी अपना रूप बदलकर इन फसलों के अंदर समाहित रहती हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर ही पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा भोजन बनाते हैं। जिसे कविता में कवि ने सूरज की किरणों का परिवर्तित रूप और हवा के भावों के साथ पैरों को उठाते, गिराते व हिलाते हुए नाचने का नाम दिया है। इसलिए कवि कहते हैं कि एक ओर जहाँ सूरज की किरणें अपना रूप बदलकर इन फसलों के अंदर समाहित हैं, वहीं दूसरी ओर हवा की थिरकन भी इन पौधों को फलने फूलने में मदद करती हैं। आंसर, plants need sunlight and air to make food. The rays of the sun also change their form and remain contained inside these crops, because plants make food through their leaves by absorbing sunlight and carbon dioxide gas present in the air, which in the poem the poet has given the name of dancing by raising and dropping and shaking the feet with the changed form of the rays of the sun and the expression of the wind. That is why the poet says that on the one hand, the rays of the sun, after changing their form, are absorbed inside these crops. On the other hand, the fluttering of the wind also helps these plants to flourish. So, student, this is the explanation of the poem PHASAL and the question answer I completed here. I hope you understand and it will be
make easily for you to understand this poem and the question answer. If you like my videos, I request you again that please subscribe it and share to your friends. I'll be very soon present you the next video for all of you. Thank you.